Usman Khalid Butt, Sadaf Kamal, Annie Jaffrey. This is the beautiful cast of the upcoming film Balu Mahi. We sat down with them to talk about the film, their relationship with each other, and everything that goes down behind the scenes. Have a look. All right, so today we have the cast of Balu, Balu, Baba Black Sheep. Baba Have you Black- any wool? So- Blue Mahi. Blue Mahi, Balu Mahi here with us. We have already been having a fun time talking to them before we started recording this. Annie जो है वो sleep port में है कुछ बहुत because she just comfortable landed in the morning. Usman, Dapper as usual. Abhi, you know, we have some BTS that we're going to release later. Maybe we'll blackmail him with it. I don't know. Nice. We'll see. And we have the very, very, very beautiful Sadaf with us. So, guys, first day of promotions. Yeah. Excited? Yeah. It's, Usman, start with you. It's been like the start of a roller coaster ride. Actually, we've been anticipating / dreading this for so long, but it's really quite hectic. Annie, for example, hasn't had a wink to sleep ever Yeah. since the London flight. बस किसी टाइम भी Annie सोने लगी मैं शायद सो जाऊं बीच में बस तुम जरा मुझे ना नज कर देना और कि उठ मैंने जाओ तो ये छुपाया हुआ है. इसकी एक रीजन ये है कि 2 महीने I had 2 a- months I had a 2 months. no. We had a burger for There's a lunch. Much more sinister story. Oh to it. God. So 5:30 a.m. I was supposed to take a rendezvous from Islamabad to Lahore. Okay. इसकी कहानी Our शुरू first promotion was starting at around 1:30. 15 मिनट इसके स्टोरी के होंगे और बाकी इंटरव्यू के 15 मिनट होंगे पंचलाइन है यार. एक तो these jealous Okay, females. let's try and give. हमसे बर्दाश्त ही नहीं है कि चलो बोलो बोलो तो- He is actually the Balu in the Balu in the. So movie, डेवू right? कैंसिल हो गई. 7 o'clock की फिर डेवू कराई, वो भी कैंसिल हो गई. Then emergency में Oh. booked a flight. So वो भी delay हो गई. PIA, Okay. God bless PIA. So when I finally reached, I didn't have any time. So literally Sorry, the first guys, my clothes, you know, जो bag से निकले हैं, I just threw them on, and these jeans But- are so uncomfortably tight that. Well, you look great. So Like I said on my Instagram, this is the closest that I've come to third base since Balu Mahi's shoot began. So yeah. So what was Forever happening alone. before Balu Mahi's shoot is what we're interested in. ये तो आपने हमें बहुत बड़ा. ये बालू माही का इंटरव्यू नहीं हो रहा. मीनवाइल ये इनको देखे ना 2 महिलाएं हो गई आपकी कॉफी टी सारे डिस्क्लेमर्स हो गए से आपके? बहुत camaraderie होने लग रही है मुझे. क्या ये team Balu and team Mahi? What is this? I mean, क्या? You guys had a lot of fun, it seems, on the sets also. We did. We So had it's Usman 1 versus Annie 11 और ये क्या? नहीं it's Usman 1 million versus Oh the Allah, two of okay. them. सबके जाऊँ 1 So million. during our shoot ना, so शुरू में मेरी और एनी की इतनी वो केमिस्ट्री भी बिल्ड हो रही थी अभी. प्लस मूवी में भी द केमिस्ट्री इन द फिल्म इज वेरी ऑर्गेनिक. Okay. सो इट्स नॉट लाइक लव और लस्ट एट फर्स्ट साइट. उस तरह का सीन नहीं है. तो इन The फैक्ट story- Lust भी नहीं है. ये क्या बात है? बहुत एक्चुअली बहुत ऑपोजिट है. बहुत इंटरेस्टिंग ग्राफ पे और बहुत सटलिटी के साथ हमारे डायरेक्टर हाइसम हुसैन ने खेली है विद द स्क्रीन प्ले विद द स्टोरी ऑफ द मूवी. But you know, initially, so you know, there was this awkwardness because we had just started working together. और हमारा we were जो- thrown into yeah. जो हमारा audition, a very tough audition, and we never met before. We Sounds never like an arranged marriage rather than a movie. exactly So that is thrown what a into- movie casting is like. It is an arranged marriage. So you know? so to break the ice, I started, you know, throwing some very off-color jokes. So Off The color touch joke. from the butts. yeah, exactly. The butts into the tuts. I won't say anything else because Yeah, it yeah, might yeah. get deleted. So No, yeah. we're not going to delete anything. What was an off-color joke that So- you loved, Tuts Annie? and butts. He's obsessed with something which I don't know if we want to talk about. The color is like. We did talk about third He's base. wearing. so- He's representing what? Chocolate, but not chocolate. Yeah, so Get it? basically, you know, it's a very natural. Shoes too, shoes. It's a very right? natural What did bodily you function, step in? guys. You know, I mean, it's very natural. Everybody does it, even women. So But, what started Usman- happening was कि मैं जो ना वो देसी गाने जो हैं उनमें कहीं ना कहीं Chocolate का जिक्र कर देता था. चॉकलेट का जिक्र कर देता था. तो you know, Okay. initially she used to be like very disgusted, and then you know. Oh, I have the appetite for all of this. Was I? वो मैं acting कर She रही just थी। put down Oh, her वो भी yogurt. acting वो भी मैं acting उसने कर उधर Right ही on yogurt cue. छोड़ दिया कि Right बस on cue. और नहीं मैं खा सकती है. देखो हाँ So Okay. yeah, और फिर जब finally हमारे I think third spell में जब सदफ आई थी तो एनी ने अपना behavior बड़ा correct कर लिया था. And he was like, उस वक्त oh, तो मैं मान ही गई थी। new girl. हाय अल्लाह ऐसा कुछ था। हाँ ऐसा कुछ था सर. You know the fun part was कि we were all first timers in a way. मतलब मैंने की भी एक film but I had a smaller role in that. It was her first film, my first film with the lead
for Jamal, for Obi, for Mustafa, all of us young, fresh, and we were very, very excited and nervous, and at the same level of nervousness and excitement. So that camaraderie just sort of happened. So, एक दूसरे का सहारा type. बिल्कुल. Yeah. So Yeah, we all understood what we were going through, हमें हमारी शूट में एक दिन ऐसा हुआ था कि हाइसम से मुझे डांट पिटी थी और बहुत सभी सबको पिटी है, सब रोए हैं, हाँ, खून बहाया है। उनके तीर का शिकार नहीं हुआ। मेकअप रूम में जाके इज लाइक के तुम रो रही हो, तुम मनुष्यत पिला रही हो, कि मनुष्यत पिला रही हो। लाइक बॉस मुझे लाइक मैं हुई नहीं हूँ। No, but why were you crying? What happened? बिकॉज हम लोग इतनी दूर थे वहाँ पे, हमारा नो Where were सर्विस you? था Where were फोन you? पे, मतलब Rama, we were in the base camp of Nanga Parbat. Oh my God! डिफिकल्ट फॉर अस। It must be. 3 Bathroom weeks का without क्या? phone. No wonder he No, was no, so we were obsessed in a with. PTDC का motel. तो वहाँ पे सारे अजीब हुए हुए छोड़ थे, दिया मैं, भाई जाओ। सारे अजीब हुए हुए थे वहाँ पे। Yeah, I'm sure. कि Yeah. सब Just रो, thinking मैं about तो that. बहुत रो रही थी। नाक से खून बह रहा था, किसी को सांस हाँ। was one of us had ठंड लग रही थी, breathing बहुत ठंड problem. थी। And how long were you there? पहाड़ for? पे चढ़ We के were कहीं there फोन for I think सिग्नल आता 21 days. No, come on, 21 days. Yeah. Yeah. Yeah, we Without lost. phone signals, you understand? Yes. Oh my! Forget I Wi-Fi. I mean, ये तो don't इन लोगों के लिए understand ज़्यादा that. प्रॉब्लम Very है specific. without इसलिए। phone signals. वो इस पे I think you got missing your mouth. उस्मान आपको हाँ। सबसे ज्यादा हमने देखा है फोन के साथ, so हाँ, इसलिए नहीं वो तो मैं जरा सैवी हुआ हूँ। उस्मान बहुत चिल था शूट पे, पता है क्यों? Yeah. बिकॉज ये जब शूट पे जाते हैं ड्रामा के तो वो बाहर ही होते हैं, तो लाइक But Nanga Parbat सिटीज base होते camp हैं for तो उसको 21 आदत days. है। हाँ, तो उसको आदत है, इसको आदत भी है, लेकिन मुझे तो बिल्कुल इसको भी नहीं थी शायद, नहीं, वो मुझे तुम्हारा तो बिल्कुल पहला नहीं spell थी। भी था। so you broke down like मैं तो melt बिल्कुल हो गई लाइक कि- स्टार्टिंग भाई में सदफ कंवल सुपर मॉडल एकदम से जमीन पे उतर आई। हाँ मैंने कहा चलो लाइक बहुत इन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया बाय द वे, हाइसम ने, इन दोनों ने सीरियसली। Okay, so Sadaf had a meltdown at the base camp, so I'm sure you had quite a few working with Usman के नहीं? No, Usman wasn't actually the और reason उस्मान for के the meltdown. meltdown. एक मेरा हुआ था बहुत बड़ा, that was shooting the song बेचैनियाँ. Okay. So it required lip syncing करनी थी, और obviously पप्पू सम्राट हमारे कोरियोग्राफर थे, बहुत अच्छे कोरियोग्राफर बेचैनियाँ and पप्पू सम्राट sounds हाँ, like- बेचैन। Think बारिश, think Oh my शाहरुख खान, God, think and की Think, साड़ी you and all, know, हाँ? Yes, ओए, pretty ओए, much, ओए। वो हसीन वादियों में, Oh my और लिप God. सिंकिंग हाँ। और डांस मैंने किया नहीं था, एंड मुझे लिरिक्स नहीं दिए थे, ये तो पूरा रट वट के सब कुछ करके आया था। Okay. हर सिलेबल पे इसकी एक अलग अदा थी, ओए, और ओए। मुझे सेट मुझे पे बहुत शौक है भाई। उन्होंने कहा कि जी आप ये सारी चीजें गा भी दें और ऐसे डांस कर लें, और बस and it all has to And mean it's something you've something. never done. I was like, huh? So after 35 takes, 30 for Okay. one, Yeah. it was a long move, कोई 5 सेकंड का proper move था, और Yeah, you know, साड़ी हिलाना। then I basically started crying, and I was like गाते गाते, I was like, I time out. What did you feel? क्या ये तो नहीं Because बताया there था was मुझे। this screen dad कि ये करो, वो Pressure तक जा बहुत रहा है, था। पे मत रुको, things like that. You need to be familiar with the song. Yeah. You do, and you need to have been given the song. So I Usman, broke down. And Usman, how was your बेचैनिया moment? हाँ. मेरे लिए आपने- तो it was a lot of fun, Yeah. like growing up, I've been fed a staple diet of very good Bollywood movies. Yeah. हमारी फैमिली में एक तरह से क्या कहते हैं, what do you call it? It was a ritual. Every afternoon हम लोग बैठते थे, दोपहर का खाना साथ खाते थे और क्लासिक फिल्में देखते थे। I always used to be so impressed by the fact कि आपको ऐसे ही लगता है कि उन्हीं की आवाज़ है, वो जिस तरह इमोट कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं। Every syllable there. So मेरा तो बहुत बचपन का ख्वाब था, so to speak। Romantic गाना। हाँ है? तो मैं तो फुल अदाएं ऐसी अदाएं दी हैं मैंने, तो दोनों को पीछे मैंने भी छोड़ दी है। रोने के बाद, ब्रेक के बाद मैंने दी है। कोशिश तो की है। और वो मेरी डांस कोशिश क्या, मूव्स का अच्छाई है है। ये। I mean, who have you been watching बचपन से क्लासिक फिल्मों में? वो like I या suppose मेहंदी के डांस प्रैक्टिसेस I suppose मैं बचपन से ही बहुत बड़ा मस्करा था। मतलब मुझे बहुत मेहंदियों पे मैं बहुत शुगर लगाता था, और अभी भी लाइक मुझे तो कहते हैं I'm the Hitler of मेहंदी डांस practices because मेरी बड़ी regime होती है, नहीं ये क्या कर रहे हो, why are you having fun, One, stop two, having three. fun, 1 2 3 ta din din ta din din ta, so
But ये के you know like dance is something जो I think मेरा पहला passion था. Okay. Before acting, before writing, before anything else. I always wanted to be a dancer, so I am a disco dancer. You are So- a jungly जानवर ये भी तो नहीं है क्या उसमें I am. बड़ा ये नहीं था lyric? एनी की दिल की बात Sorry, वहाँ पर आ मुझे नहीं गई है. It's okay guys. But ये के like वो शौक था and I'm really happy. In fact मतलब मैंने तो हाइसम को बहुत push भी किया था. I was like because original first draft में नहीं था ऐसे. और मैं डर रही थी कि अच्छा लिपसिंग भी होगी नहीं होगी बट तो हमारा जो गाना है बालू माही जिसका Yeah, yeah. वीडियो भी निकल चुकी है, Marshall has gotten a Yeah, great it's feedback and response. really good, huh? So you know kind of मैं भी push कर रहा था कि हाइसम थोड़ा यूटिलाइज तो Dance करें तो ना, करने थोड़ा हैं। करवाने तो दें, तो बहुत अच्छा. And it's interesting because it's not one of those टीके like injected for the जबरदस्ती sake का- of I it. think it weaves into the story very Yeah. beautifully because No, but the moves are flawless. Yeah, Yeah, I was yeah, really impressed. Choreography and the execution. props. talking about Balu Mahi Yeah. कौन सा flawless नहीं है because you know it seems like anyways हाँ बेचैनियाँ भी बड़ा बेचैनियाँ flawless भी है. चलो वो can't बड़ी video अभी release नहीं इसने हुई है। ईस्टर्न सेंसुअलिटी की चस दी है. Annie बारिश ने. में. क्या 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 नहीं किया हमने बारिश में. क्या क्या नहीं करके- किया हमने यार, ये तो बहुत लंबा इंटरव्यू चलेगा आज, मुझे लग रहा है. सदफ आप बताओ. I mean you obviously know we've seen Bhalu Bhai, you know Balu Mahi, Balu Mahi. both of them. What are you doing in the film? Are you doing some बरसात के moves? यार नहीं, मेरा एक कैरेक्टर जो है वो बहुत मजे का है. Okay. वो जब टीवी पे आएगा सब हंसेंगे. अच्छा. I'm Okay. sure. So अल्लाह करे सब Oh. हंसे. She actually has the best उम्मीद- line in the film. But Yeah, yeah, yeah. वो The बोल best सकते हैं line. line? नहीं obviously नहीं not. बोल सकते ना. She has the best Okay. liner. हाँ, Yeah. तो बहुत मजे का रहा है. तो मेरी CT type लाइन line है कोई. She's a femme fatale in the Oh my movie. God. हाँ, Alright, जब yeah. कोई जब लाइन बोलूंगी तो सब बोलेंगे ओह माय गॉड ये, तो यू नो ऐसा होने वाला है. जिस तो तरह होते हैं ना वैम्प्स होते हैं आपकी फिल्मों में, तो मैं तो कैटेगराइज करता I'm हूँ not a vamp. ये एक झल्ली वैम्प है. हाँ. बिकॉज बहुत इनोसेंस भी है कैरेक्टर में, बहुत यू नो देयर आर लॉट ऑफ फ्लेवर्स इन द कैरेक्टर एंड मार्शल शी डन अ फैंटास्टिक जॉब. Yeah. And she's gonna make people laugh. Yeah. एग्जैक्टली. और मैं तो हमेशा हाइसन को बहुत गिला शिकवा करता था कि आपने बेस्ट लाइन जो है वो सदफ कमल को दे दी है फिल्म की, बट इट्स एक्चुअली ट्रू. जो लोग यूज करेंगे I'm sure. So it's a इस्तेमाल complete करेंगे वो. fun movie or हाँ, बहुत it's fun. like a Yeah. laugh riot you can It's say a or fun is it? film. I mean, the whole point is to appeal to the masses and thoroughly entertain them. Yeah. At the same time, there is a message of women empowerment, and Mahi is also central to that, and Sadaf, and you know the female characters in the film. That girls, you know, should be in charge of their own destiny. life. If they're given the resources and they're, you know, educated or intelligent enough, they don't have to just have the path of, you know, marriage. So Usman, after doing so many serials, I don't think आपने दो बीवियों वाले किए हैं, मंडप पाकिस्तानी drama is नहीं, all नहीं, about नहीं. दो बीवियां and all. But after doing so many serials and you know the being appealing to masses and doing stuff with like Cinderella and now Sanam and all that. I mean, how is this different? How are people going to see Usman on the big screen and say कि हाँ भाई ये तो completely फर्क बंदा था? एक तो क्या कहते हैं, मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा बिकॉज आई डोंट थिंक दैट एटलीस्ट सम ऑफ द सीरियल्स दैट आई हैव डन हैव just been like for catering to the masses. I think that On Zara जो हाइसम हुसैन ने ही डायरेक्ट किया was a fantastic comedy at a time where you know people mistake loudness for humor, people mistake OT over the top kind of theatrics for humor. So I think that was a fantastically woven script and I urge everybody to go watch it because like बहुत कम ऐसी चीज़ें हैं It जिनकी wasn't मैंने a typical run हाँ. of the mill. It was a very कि मैंने स्क्रिप्ट पढ़ के ही आपको हंसी आती है. प्लस इवन सिंड्रेला यू नो सो इस फिल्म में जो डिफरेंस है वो एक तो आई थिंक दैट देयर इज अ लॉट मोर टू प्ले विद बिकॉज जनरली जो होता है कि हमारा जो ड्रामा है अनफॉर्चुनेटली वो एक रट में फंसा हुआ है ऑफ वेडिंग्स एंड यू नो मतलब इट्स ऑल रिलेशनशिप ओरिएंटेड. इधर इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज इस फिल्म का हीरो माही है. Annie Jaffrey का character is the hero of the movie, you know. मतलब she is the heart and the soul, and it's not just about the women empowerment angle, which is a very important issue जो कि I think के हर strata में resonate करेगा, whether it's the upper middle class, whether it's upper class, whether it's the lower class, you know. आई थिंक कि ये एक रोल मॉडल बनकर सामने आएंगी. इनका कैरेक्टर जो है वाओ हम इतना सीरियस हो गए एकदम से लाइक ग्रेविटास आ गई है कॉन्वर्सेशन में. बट ये कि यू नो एंड शी गोज थ्रू सो मेनी डिफरेंट मूड्स एंड काइंड ऑफ swings? नॉट मूड स्विंग्स बट Like यू नो shades or okay. shades exactly. So
kind of playing the foil to that kind of character was very interesting because on paper you see बहुत एक risk run करता है of the character then becoming boring, right? Because you have a live wire of a character and then you have somebody who's kind of a reactionary, at least in the first half. तो but you know the dynamics और जो interplay करवाया है हाइसम ने हमारा, you know it's fascinating. और आपकी body language है tense up हुई हुई है. अब ड्रामे में it's all about the close up, right? Whereas film में आपका frame खुलता है. आप you know, so you're literally it's back to theatre where you're acting from the, you know, top of your head to the to your toes. So तो वो और self control लाना, you know, because drama में भी एक होता है कि आपके एक set expressions बन जाते हैं. You know, how you have to be sad. You have to undo that, all of that. So you have to unlearn. How you have to be कहते हैं हम flirtatious. TV You know. Are we getting that? Are we getting that? So but mostly for the guy, you know, the role is very limited. बहुत कम ऐसे serials आते हैं और ड्रामे आते हैं जिनमें, I mean, it's always very women oriented, right? The subject. So the guy is either the foreign return or मतलब उडारी जैसा play जिसमें एक negative character जिसने हसन खान ने play किया, that's very rare. और plus हमारे जो dramas हैं वो they've gone through this very negative trend of like kind of glorifying very sensitive subjects. But in this film, you know, कि कहते हैं the character, मुझे जो सबसे ज़्यादा मज़ा आया बिलाल aka बालू को play करने का वो ये था that his whole transition from the man that he feels that he is and he's quite happy with the kind of person that he is versus his encounter with Mahi और वो किस तरह उसका बिल्कुल perspective बदल जाता है. और once again this is not like, you know, जैसे मैंने पहले भी कहा love at first sight के, you know, एकदम से ही वो चौंक जाते हैं और कहते हैं oh my god suddenly new avenues have opened for me. But interesting choice of words, no? But ये कि आहिस्ता आहिस्ता it's very organic and very subtle the way she changes him and then in turn the way he kind of changes her. और इधर जो शर्मीन आके बीच में अपना एक तड़का डालती है उससे, you know, it's very interesting because मेरा जो relationship है with Mahi in the movie versus मेरा जो relationship है with Sharmeen in the movie, that is like a 180 degree, completely different, you know, so it was very interesting and quite a challenge. Avenues सारे वहाँ हैं. Avenues तो जी हर जगह है. आपको तो मेरा पता है, मैं तो हर जगह ढूंढ लेता हूँ avenues. But नहीं, क्या कर सकते हैं भाई, एक की शादी हुई है और एक taken है. So दरवाजे खुलने से पहले ही बंद हो गए. But ये कि it was that was a lot of fun, you know, playing Balu, playing his weaknesses, playing his strengths. And no, and he comes out of his shell through the journey with Mahi. He's able to do things. Thank you for clarifying that his name is Bilal. मैं सोची थी Bilal. माँ बाप ने नाम पंजाबी दादी है ना तो वो बालू कहती हैं. Okay, so Annie, what made you choose Balu Mahi as your not debut, but you know what was it about the character that you felt? Okay. Oh wow. Mahi's character, उसमें बहुत गुंजाइश है एक्टिंग करने की. She goes through an incredible journey. It's a very multi-dimensional character. शुरू में we see this very confident girl who finds, you know, Balu comes and is an escape route from her. No love, no lust in the beginning. No love, no lust. She finds an escape route from her fate, which is this arranged marriage, which she doesn't want to, you know, frankly be part of, and he forms this escape route. Okay. So then they're on this journey where वो बदतमीज नहीं है, उसको अपनी बात मनवानी आती है. She bullies him a little bit, right? Of course. And you know, they're on this fun, they get in these funny situations in Lahore. उसके बाद you see a sensitive side to Mahi as well, because there's उसकी माजी में ऐसी चीज़ें जो resolve नहीं हुई हैं. She wants to find out things about her past, where she came from, and you know who she is. So you see another more sensitive side of Mahi. Here we move to the beautiful north, and Shandur is our you know set. Is where the film takes place. Sorry guys, I'm a little jet lagged. In the second half, and then you have the sports element as well over there. We have polo. I know a little bit of horse riding, but I had to train for that properly. और मुझे polo भी सीखनी पड़ी, and it's very hard. Polo, you know, to घोड़ा चलाना with a stake or all of that. So there's that sports element as well, which was very exciting for me to do. And then some twists and turns, which I think you have a little bit of a hint about, लेकिन वो मैं बताना नहीं चाह रही ताकि वो हर चीज़ नहीं expose हो जाए. और वो भी बहुत challenging था, जो इंशाल्लाह audience film में देखेगी. So yeah, there's a roller coaster of a ride with Mahi's character, and I think it's a dream come true role. Great. So guys, there's a lot going on in the film. There's Usman, there's
Annie, there's Sadaf, and Just me there's alone is a Shamli. lot. I'm a handful. मैं इसी उस्मान पे रुक गई थी 5 सेकंड क्योंकि there's बहुत कुछ है Usman, बहुत कुछ है बहुत कुछ है. so yeah so it's coming out on the 10th of February. Inshallah. Yeah, and you guys would not want to miss this. It sounds like a treat and a half. These guys are a treat and a half. So guys, best of luck. Thank you. We're going to Thank see you at you. the premiere, before the premiere. Yes. After the Inshallah. premiere. Thank you for having And us. This was a lot of fun. Thank you so much. Thank you.